मतलब इसको कई तरीकों से शुरू किया जा सकता है. The topic of modernity and what is modernity, what is modernization, what is the modern. तो एक मैं जनरल सवाल करूंगा पहले आप सबसे, सब यहाँ सबको ज़ाहिर जवाब देने की जरूरत, जिसका भी इसमें जो भी देना चाहिए, कि आपके ख्याल में मॉडर्न क्या है. इसलिए ये it's a subject that can be approached from many different angles, and theorists, scholars in different disciplines, as well as popular discourse about this topic, in popular discourse about this topic, it's described from many different vantage points. So it's just, when we talk about modernity or modernization, it's important to remember that it's a contested term. It has, many ways you can approach it, and the scholars will be looking at, which will be diverse, are approaching it in various ways. And there's some ways we don't want to approach modernity because they're not very, I would argue, they're superficial ways of looking at what modernity is. So we want to kind of be more serious about investigating what is modernity. So just मतलब general, अगर article पे based नहीं, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, मगर generally अगर आपसे पूछा जाए कि what is modernity, क्या है, क्या चीज है ये, क्या जवाब होगा? Let's get at least a couple of people. मेरे नजदीक मॉडर्निटी जो है वो रिसेंट टाइम्स में मेरे ख्याल में जो हमारी रिलीजन और साइंस से जो डाइवर्जेंस हुई है, वहां से रिसेंट टाइम्स में आप उसको देख सकते हैं कि रिलायंस ऑन द प्रोग्रेस इज टाइड टू साइंस एज अपोज टू जो रिलीजन जिस तरह से करता था, और इंडस्ट्रियलाइजेशन और फिर ऑटोमेशन और जो भी है टेक्नोलॉजिकल, उस पर रिलायंस बहुत हो गई है. सो दैट इज इन रिसेंट टाइम. हमारे मेरे ख्याल में टॉपिक के हवाले से जो मेरे जहन में जो मेजर चीज़ आती है वो ये है कि जो हमारा जो नॉलेज का जो सोर्स है वो मॉडर्न टाइम्स में इज बेस्ड ऑन द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी, और उस पर जो रिलायंस है, जो हमें जो कहते हैं जो सेंसेस हैं, जो वेरीफाइबल सेंसेस, एम्पिरिकल एविडेंस, उससे डिराइव होती है, एज अपोज टू जो हमें इंट्रिंसिक हमारे में वदियत की गई है जो अल्लाह ताला की. तो जो प्राइमोडियल जिसे कहते हैं कि जो थे सोर्सेस, सो वो हमारे जहन से आहिस्ता आहिस्ता महव हो गई है ड्यू टू द एम्फसिस ऑन इन मॉडर्न टाइम्स. तो अब वो हमारे जहन से निकल के अब एक फोकस इज टोटली डिफरेंट, और वो चीज़ एक किस्सा पारीना बन गई और एक वो ओल्ड वाइफ्स टेल है बेसिकली. मेरे नज़दीक एक ये छोटी सी डेफिनेशन है. That's very good. So आपकी definition काफी जो हमारे आज editor हैं Dr. Sidhu, we would agree with much of what you said, but we'll come back to that. तो आप basically science or technology की आपने बात की as major determiners of modernity and basic and the scientific method, empirical sensory knowledge being again another key indicator of where modernity begins, or how to talk about modernity, how it's different from what is not modernity, what came before. Yes, what other people? I think talking about modernity, one thing that comes to my mind is art. And art के अंदर जो movements थी, lots of movements in art were very sensory, very individualistic, very sensory, breaking the law, just thinking the world from, I think maybe a grounding in humanism as well. So thinking from humanist perspective, it's how the man or human sees the world and how it is presented. It was also, I think, would consider a tenet of modern art or modernity in general in life, the world view in that sense as well. Excellent. Yeah, so complementing
science from another angle. Yeah, so as talking about the issue of humanism, how it makes the human kind of the center of things. And we'll come back to all of these. I just right now want to. I just want to add that I think modernity की definition बहुत self-defined है, because I feel if we look at from a chronological perspective, we often look back at history and see that it's it's old times and the current times we perceive as being modern. But जैसे जैसे इस course को हम पढ़ रहे थे, I was reflecting that हमारी जो 10th to 13th century Islamic intellectual history की development थी, that was very modern. अगर हम उसको आज से भी compare करें, we are not involved in those kind of intellectual developments architecturally या intellectually वैसे भी historically and philosophically भी. So I feel कि like अगर हम उसको time span पे मैं ये करें, तो it's not always that the past is less modern or antiquated or the current times are modern, and I feel कि modernity की definition भी West ने हमें दी है starting from the Renaissance period, but अगर हम इसको अपनी Islamic history के perspective से देखें तो हमारी Renaissance उनसे 400-500 years से पहले आ चुकी थी. And we need to look back at those times. So I am really confused at what we perceive as modern, because I feel it's so self-defined and relative. So yeah, this brings us to the question. Yeah, modern is defined in many different ways. So even first of all, call modern as a time period, right? So whether it's a period of history, or a particular period, or it's just in the way that you're using it, which is modern just means whatever's contemporary, or perhaps it has certain kinds of qualities that define some period as modern. As you see, I'll shy away from that definition a little bit, but we'll, because that just in the sense that there could be some kind of term that can be used that for what is innovative or new or changing, but using modern for that, perhaps we could talk about it, is leads to a lack of enough distinction between something that are very specific to what we normally call the modern period, historical period, the last few hundred years, and what came before it. Although, of course, there's things that are continuous. So if you look at, for example, if like you mentioned, science and so forth, I would say you're right. I mean, there were other times when there were periods of flourishing of science, or of new forms of technology, of innovation, and things that distinctly are known as modern, that we define or oftentimes associate with modernity. But are they? Is there something different about modern science, or is there something different about some of the kinds of technology that's being developed here? Is there a different worldview or a different approach involved? And I think it's an open question. There's people who have different views on it. So that's definitely adds to the discussion. Other people. जी मेरे ख्याल में एक सेक्युलर लिबरल साइंटिफिक अप्रोच जो है मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी की, जैसे भी बात ये की गई थी कि हर तरह की ऐसी एक्सप्लेनेशन लाइफ से रिलेटेड जो कि आपकी सेंसेस तक, सेंस एक्सपीरियंस तक महदूद है या सेंस एक्सपीरियंस से आती है. मेरा ख्याल है कि ये किसी भी आर्ट के रेल्म में आप चले जाएं, फिलॉसफी के रेल्म में चले जाएं, हम साइकोलॉजी की जब बात करते हैं उसमें ह्यूमन एक्सपीरियंस की, ड्रीम्स की, किसी भी चीज़ की जब हम एक्सप्लेनेशन देते हैं तो वो हम मटीरियलिस्टिक सेंस में ही दे रहे होते हैं. तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि मॉडर्निटी को आज हम जिस तरह से, आज के पर्सपेक्टिव में मॉडर्निटी को जिस तरह से हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो दिस इज हाउ आई कॉन्सेप्चुअलाइज मॉडर्निटी. मटीरियलिस्टिक फिलोसफी की हवाले से जो हम एक्सप्लेनेशन देते हैं अपने एक्सपीरियंसेस की.
All right, that's good. تو آپ نے یہ کچھ اس میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں that oftentimes associated with modernity, secular, for example, اس پہ بھی ہمیں کچھ ڈسکشن کرنی چاہیے. اس secular can be another kind of those words that have many definitions in the way that they're used in a popular fashion, but liberal, I think, yeah, maybe liberal is a more complicated word. In some ways, from a traditional point of view, it might seem like it's liberalism, but maybe we can bring that up as well. Materialism, of course, it ties with the pehli jo baat Zubair sahab ne ki thi. At least it usi taraf ye baat jati hai ki aur mere khayal hai aur bhi of a kind of knowledge jo ke sensory or physical duniya se connected ho, giving that not only being given primacy, magar more than that, it being the defining way of knowledge, or that and we'll talk about that today as well. So yeah, that's all very helpful. So we're kind of collecting different cheeses. Balki main is pe likh deta hu yahan pe. Just these are things we'll come back and talk about. The modernity se related. Main yahan pe likh raha hu on the basically just words jo aaye hain hamare paas taki we can come back to it. جو رواج ہو, ٹریڈیشن ہو, رائج ہو, اس سے ہٹ جائے, اور اس میں آف کورس اپنے پازیٹیوز بھی ہیں اور نیگیٹیوز بھی ہیں. انویسٹیگیٹو ڈیفینیٹلی مور دین بیفور دین دا ٹریڈیشن اٹ سیلف. ٹریڈیشن تھوڑا سا ذرا اسٹیل ہو جاتا ہے, ایک جگہ آ کے رک جاتا ہے, اور صرف ماڈرن ایک ایرا جب شروع ہوتا ہے, جو بھی جس چیز کو بھی آپ ماڈرن کہہ لیں, اس میں انویسٹیگیٹو بھی ہے, ٹریڈیشن سے ہٹ کے بھی ہے. ٹریڈیشن کو جب روک دیا جاتا ہے تو اس کی بہت سی اچھی ویلیوز اور باتیں ٹوٹ جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, اور تھوڑا سا میرے خیال میں وقت ایرا جو اسپیس آؤٹ بھی ہو جاتا ہے. بہت زیادہ پلیٹ فارم اس کا بائنڈنگ نہیں رہتا بیکاز آف ویلیوز, لیک آف دیٹ. تو رواج سے ہٹ کے, اور بہت سی چیزیں, ٹیکنالوجی ہے, سائنسز جو ہیں, سرٹنلی اس کے اپنے بہت زیادہ انویسٹیگیٹو ہونے کی ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہے, جو شاید ٹریڈیشن میں نہ ہوتی. ٹریڈیشن میں ہم سوال کرتے ہوئے, ڈسکور کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا ریچول ہے, اس سے اگر ہٹ گئے تو شاید ہم پہ کوئی فتوے سے لگ جائیں گے, بھلے انگریز ہو یا مسلمان ہو, کوئی بھی ہو, وہ تھوڑا سا ڈر جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا گلیلیو وغیرہ سب کے ساتھ بہت کچھ ہوا, جون آف آرک کے ساتھ بہت کچھ ہوا. سو کئی دفعہ جب ٹریڈیشن سے ہٹ کے کی جاتی ہے چیز, تو اس میں پھر یہ نہیں رہتا کہ یہ اچھی ٹریڈیشن ہے, اس کو فالو کرنا ہے, یا یہ ایسی کچھ چیزیں ہیں جس کو فالو کرنے, کیونکہ انویسٹیگیشن ایک ایسی چیز جس کی وجہ سے آج ہم سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی نہ کرتے. اور مٹیریلزم جو ہے, خیر I personally am definitely against that, because capitalism کے اپنے فائدے ضرور ہوں گے, لیکن ڈاؤن سائڈ بہت زیادہ ہے. So when you talk about the definition of modernity, میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو کچھ نہیں, but what I've gathered from all these lectures here, it is the leaving of the tradition and stepping into the zone of more investigation and trying to progress and finding and discovering more. Certainly traditionalists بھی بہت ماڈرن تھے, وہ اپنے زمانے کے حساب سے, اس لیے وہ ماڈرن زمانہ ایک ایک قدم اور آگے آتا گیا. سو ماڈرنٹی کی کچھ چیزیں تو میں بہت اس کے پرسنلی, بیکاز آئی بلانگ ٹو دیٹ اولڈ ٹائمز ویئر ویلیوز were considered much more important than anything else. اور اگر ویلیوز اور یہ ساری چیزیں کہیں کہیں ہم فالو کرتے تو ٹھیک ہے, سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں اور ایک حد تک مٹیریلزم میں ضرور پروگریس کرتے, لیکن کچھ ٹریڈیشن کی چیزیں نہ چھوڑتے تو شاید مکس ہم تھوڑا سا کرنے سے آج, جس کو ہم اس لیے لوگ جب ماڈرن کا لفظ کرتے ہیں تو تھوڑا سا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے اس کا, اسی لیے ہو جاتا ہے. جی تھینک یو. Thank you.
Alright, आपने एक तो मेरा ख्याल है एक important term जो इस्तेमाल किया तरक्की या progress, वो भी एक term है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि progress क्या होती है या progress को किस तरह define किया जाता है. Universal term है या ये एक loaded, जैसे loaded term कह सकते हैं कि, और next week मेरा ख्याल है जो आपकी readings होगी उसमें ये थोड़ी सी प्रोग्रेस को डिस्कस किया गया. दूसरी बात आप मेरे ख्याल इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, वो जरा बहुत ही ब्रॉड टर्म है. मैं बिल्कुल समझता हूँ जो आप कह रही, मगर उसको आई डोंट नो इफ आई शुड पुट दैट अप एज, मगर हाउ शुड आई पुट दैट. इसलिए कि वन कुड आर्ग्यू दैट कि इन्वेस्टिगेट तो हमेशा ही लोग करते रहते हैं, मतलब इन द सेंस कि इट्स अ ब्रॉड इनफ थिंग दैट किसी भी सोसाइटी में लोगों ने there's produced massive amounts of literature on all sorts of subjects, which can be called investigative. But I think maybe aap shayad rational using particular rational scientific methods I think that's the aap us taraf ja rahi hai, but I don't know. Well, rational and of course scientific, investigative, definitely is a broad term, but as a positive step towards finding, which even the traditionalists and older, all these studies, they were based on investigation of some sort, whatever. So it's a very positive thing, certainly. What I meant definitely is not only scientific and also making progress, which is a step forward in whatever subject or whatever field it is, not standing there and making it stale. In that respect, I meant investigative and all that. However, investigation to pehle bhi agar na karte, to itni kitabein, our Muslims have written books, Christians have written books. Look at the Greeks, their philosophies, they were questioned and they were progressed. And if you talk about even Confucius, I mean, they were all things which were introspective, investigative, and progressive. Modern, is वक्त मेरे ख्याल में 2-3 चीजों की वजह से जरा सा मेरे लिए एक negative लफ्ज इसलिए बन गया कि traditional values of culture, for example, of some rituals which give you discipline. That's why modern thoda sa, only in this particular aspect, not otherwise. Modernity के साथ ये जो दो बातें आपने की, और भी लोगों आप में से many, I think a couple of people touched on that, कि loss of tradition या modernity को tradition के खिलाफ define किया जाता है, at least. But that's one possibility. It doesn't have to be the only way of looking at modernity, but modernity as contrasted to tradition, and therefore modernity as a loss of tradition, या loss of जैसे आप कह रही थी to values or traditional values. जी अगर हम वो मॉडर्निटी को पिछले 400 साल का जो हिस्टोरिकल पीरियड है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें, मॉडर्न वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो इसको अगर हम जो एक प्रोग्रेशन का लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर हम एपिस्टेमोलॉजी और ओंटोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे किस तरह चेंजेस आई हैं, तो वो देखा गया बतदरीज वो चेंजेस ऐसी हैं कि जिसे आप कहते हैं कि इट्स अ डिनायल ऑफ एनीथिंग एब्सोल्यूट और इम्यूटेबल, और मतलब कि प्रोग्रेसिवली अगर आप देखें, और वो जो डिनायल है उसकी इंटेंसिटी में भी, जैसे कहते हैं, उसकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज हुई है वक्त के साथ. वो एपिस्टेमोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में देख लें या ओंटोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में देखें. और इसकी जो लिमिट है मॉडर्निटी की, मतलब वेयर इट इज हेडिंग, इट्स एब्सोल्यूट रिलेटिविज्म, वेयर देयर इज नो ट्रेस ऑफ एनीथिंग एब्सोल्यूट, एनीथिंग एटर्नल और इम्यूटेबल. मतलब आगे जितनी प्रोग्रेसिवली थ्योरीज पेश हो रही हैं, जो आगे भी शायद होंगी, उनका मकसद यही होगा कि कोई ट्रेस ना रहे किसी भी किस्म की एब्सोल्यूट रियलिटी का. उसमें यह भी है कि हम बहसते इंसान किसी ऐसी चीज को, ऐसी चीज के बारे में इल्म भी हासिल नहीं कर सकते जो कि एब्सोल्यूट या इम्यूटेबल है, और फिर उसमें सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट भी आ जाता है. ऑब्जेक्टिविटी जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट डिनायल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ये भी इसकी लिमिट होगी मॉडर्निटी की. एब्सोल्यूट रिलेटिविज्म की तरफ बेसिकली हम जा रहे हैं. तो मेरी नजर में टेंडेंसी यही है मॉडर्निटी की, मतलब मॉडर्न वेस्ट
के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, रेनेसांस के बाद देखा जाए, तो it's absolute, it's a denial of anything absolute, anything immutable, anything eternal, or it is heading towards absolute relativism. तो मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूँ. That's very helpful. मतलब ये भी एक और एंगल है जिसके, so I'm just going to put relativism, इसलिए कि lack of absolute जो है वो यही है, मतलब यहाँ से शुरू होता है, और एक जनरली इसमें सारे पोस्ट मॉडर्निटी भी आ जाती है, but a movement towards relativism, वो शायद आज वहां तक बात पहुंच जाए जब डिस्कशन में डॉक्टर नासिर की किताब अब करेंगे, मगर it's yeah, so that's another good other at least nuancing of the conversation by introducing this topic. So